What's up, gang? It was 12th of March 2026 today, and man, today was a very unlucky day, very unlucky day. So what happened basically? सीन ये हुआ कि प्राइस जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ 5 बजे, तो मैंने जो है लाइक आई मार्क द रेंजेस की एक कंसोलिडेशन रेंज थी, सही है. सो व्हाट आई वाज बेसिकली वांटिंग इज़ कि मैं आई वाज वेटिंग फॉर अ candle to close below this range so that I can look for a sell towards the downside. There were no buys for me today, only and only sells. Okay, so अब हुआ क्या सीन, पहला सीन ये हुआ कि now at this point I was waiting for a candle to close. अब सीन क्या था, on the 30 minute this was a clean range, but on the 15 minute there was a bit of a support, as you guys can see over here. So ये एक सपोर्ट थी 15 मिनट पे, बट 30 मिनट पे was clean range. So what I was expecting, मैं बोला I was looking and managing this trade on the 30-minute time frame, because there was clean range for price to move on the 30-minute time frame by ignoring the 15-minute time frame support. Because if there is high volume and if price has, and if let me tell you one thing. Yeah, at this point, right? एक चीज़ बताने दो मुझे. अच्छा, सो मेरा ट्रेड आइडिया क्या था, मेरा ट्रेड आइडिया था कि एज सुन एज दिस करंट 15-minute कैंडल. अब सीन क्या था, सीन ये था कि दिस वाज अ कंसोलिडेशन, प्राइस केम बैक and closed below this range. So yeah, so now what I was waiting for a 15-minute candle to close below this range, and as soon as the next 15-minute candle wicks up and starts to break the low of this candle, there's a high probability for price to then go down, right? So this was my analysis. सो मैंने वही करने की कोशिश करी यहाँ पर. एज सुन एज दिस कैंडल विक्ड अप, as soon as this candle wicked up and it started to break the high, let me show you. Yeah, as soon as this candle wicked up and it started to break the low of the previous 15-minute candle, I executed a sell. Why? Because I was looking for a trade on the 30-minute and I was expecting high volume, so, and with volume price could go down. So yeah, ये मेरा इस पे ना analysis था. This was the first trade which I took, and my stop loss was I placed it over here. Same, I placed my stop loss all the way over here. Yeah, I placed it over here. As soon as it broke the high again, मैंने अपना ट्रेड बंद कर दी. तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड विच आई टुक, विच मैं $28 के लॉस में निकला. सही है. फिर जो दूसरी ट्रेड थी, आई गेव माई दिस ट्रेड अ सेकेंड चांस, एंड नाउ आई वाज वेटिंग फॉर अ 30-minute कैंडल टू क्लोज. सो इफ अ 30-minute कैंडल क्लोजेस below this zone, so and then it has a very high probability for it to correct, right? Because a 30-minute candle is a good confirmation. So I was expecting a 30-minute, like waiting for a 30-minute candle to close below this range so that I can execute with a stop loss of to the previous high of the 30-minute candle. So yeah, तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ 30-minute कैंडल टू क्लोज. सही है. अब एट दिस पॉइंट मैंने क्या किया, मैंने आई एग्जीक्यूटेड अ सेल ओवर हियर एज सुन एज दिस 30-minute कैंडल क्लोज. अब नाउ एट दिस पॉइंट आई गिव माई ट्रेड अ सेकंड चांस. सही है. Now at this point executed. अब सीन देखो ना, सीन क्या सीन, ये 30 मिनट पे एक ये था, प्राइस केम बैक क्लोज्ड, मेरा बेरिश कैंडल ब्रोक द सपोर्ट एंड नाउ एग्जीक्यूटेड अ सेल ओवर देयर. सो अब इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे इसके सेल एग्जीक्यूट किया राइट ऑन द कैंडल क्लोजर. स्टॉप लॉसेस ऑन द प्रीवियस 30 मिनट. टारगेट इज सिंपल 1:2. सही है, नथिंग मोर नथिंग लेस. दिस वाज द ट्रेड. अब सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि price went up, established a high first, and then and then as it started to break the low, now at this point, just see the chart. Price, this was a consolidation, this was a support. Price was in an uptrend prior to this consolidation. Price was in an uptrend, consolidated, made this consolidation, made this support, broke the support. Good 30-minute candle closed below the support, executed on the candle closure with a stop loss of the previous candle's high, and target is simple 1:2. This was the trade. Now अब इस पॉइंट पे ना I could have done one thing. I could have trailed my stop loss to this high. Why? Because see, अब ना this high has been established. सही है, अब ये high जो है it's established. So if price is breaching this high again, then there is a very less probability for price to continue in my favor. लेकिन मैंने क्यों नहीं अपना स्टॉप लॉस चेंज करा, वो इसलिए नहीं चेंज करा बिकॉज आई वाज मैनेजिंग दिस ट्रेड ऑन द 30-minute. वाई? बिकॉज देयर वाज अ सपोर्ट ऑन द 15 मिनट. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता कि प्राइस को टेक सम सपोर्ट
and then eventually reject from the zone again and then go back down. So yeah, so that is the reason why I did not trail my stop loss over here, which I think was a big mistake, because if I had done that I could have lost less. अब सीन हुआ, it went in some profits, $25-30 का profit show हुआ था मुझे, and then it started to go up. Now at this point it has started to breach the high. अब इस point पे अगर मैं trade close कर देता ना $44 के loss में, तो it would be a very good trade, लेकिन वो मैंने नहीं किया. सही है, it went up and took my stop loss. सही है, तो ये ट्रेड थी. अब मैंने इस ट्रेड में $96 लूँगा, लेकिन पता है मसले की बात क्या है? मसले की बात पता है क्या है ब्रो? मसले की बात ये है, it went up, then it came back down and then it hit my TPs. This was a very unlucky day bro. मेरा दिल टूट गया आज, सही में लिटरली मेरा दिल टूट गया है, दिल टूट सो गया है. मैंने ना एक वीडियो ऑलरेडी इस ट्रेड कैप बना दिया था, लेकिन उसमें ये नहीं हुआ था. तो आई एम मेकिंग दिस ट्रेड कैप अगेन सो दैट आई कैन शो के मैंने यहाँ पे आई एग्जीक्यूटेड ओवर हेयर, स्टॉप लॉस वाज ओवर हेयर. सो ये टारगेट वाज मेरा, ये सही, ये टारगेट था मेरा. दिस शिट वेंट अप, टुक माय स्टॉप लॉस एंड देन gave the move in my favor man. इससे ज़्यादा बुरी किस्मत क्या हो सकती है? पता नहीं यार, शिट सीन्स थे यार आज. पड़ा है ना, मतलब आई कट हैव, देखो यहाँ बढ़ना है. बस मुझे ऐसा पता है क्यों लगता है, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि दिस वाज अ 15 मिनट सपोर्ट. 15 मिनट सपोर्ट्स को यू कांट इग्नोर देम. सही है, तो यहाँ प्राइस गई, इट टुक सपोर्ट एंड देन ब्रो broke my heart literally. I should not overanalyze this trade. It was a good trade. I took a good setup, but still, bro, still like थोड़ा सा ना दिल टूट गया आज. वो इसलिए क्योंकि अच्छी ट्रेड, एवरीथिंग वाज गुड, एनालिसिस इज गुड, गुड सेटअप, बट ये जो बैट की टांग, ये जो बीच में ग्रीन कैंडल आई ना, इसने पूरी मुझे जस्ट इट केम अप, stopped me out and then gave a move in my direction man. और क्या मूव दिया यार मार्केट ने, क्या मूव था ये. मैं कैसी उस्ताद, मज़ा ही आ गया रे उस्ताद. क्या मूव दिया यार इसने मार्केट ने ब्रो. पता है मैंने ना ऑलरेडी बहुत लॉस कर दिया था इस पॉइंट पे. लाइक आई लॉस्ट $100. इफ़ आई हैड क्लोज माई ट्रेड समवेयर ओवर हेयर, सही है, समवेयर ओवर हेयर, $50 के लॉस में, एज सुन एज इट हैड ब्रोकन दिस हाई, मैं फिर भी ना आई कुड हैव लाइक गिव दिस ट्रेड अ थर्ड चांस बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड सेटअप. सही जैसे, लेकिन मैंने ना बिकॉज आई हैड लॉस सो मच टुडे, आई कुड नॉट रिस्क मोर. सही है, क्योंकि अगर प्राइस ने ऊपर जाती, सही है कि 30 मिनट बना दिया, वापस नीचे आती ना जैसी प्राइस, एज सुन एज द प्राइस वुड हैव कम बैक. सही है, राइट ओवर हेयर, right over here. So yeah, right over here I could have placed another trade. सही है, मैं यहाँ पे, क्योंकि अब अगर प्राइस नीचे गई, ऊपर गई, सही है, और फिर वापस नीचे आई, that means that now there is a very high probability for price to go down. लेकिन I could not do this because I didn't had enough risk left. सही है, और मैंने फिर चार्ट्स भी बंद कर दिए थे क्योंकि आई डेंट वांट टू ओवर ट्रेड. सही है, बट सेटअप अच्छा था, मूव भी बहुत कमाल का था, लेकिन वही बात है ना उस्ताद, कि क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे, क्या बोलूँ. दुख में यूँ मैं और क्या कर सकता हूँ. सो एनीवेज, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कुछ नहीं कर सकते आप. सही, लॉस्ट $126.2 टुडे एंड bro, very hard. It's taking a toll on my mental now. कोई मसले की बात नहीं यार. लाइक आई न्यू, लाइक कुछ नहीं होता. लेकिन पता है मसला क्या है? मसला ये है कि जब ये बदकिस्मती होती है ना हमारे साथ, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करूँ मैं, क्या ही करूँ. इतना अच्छा सेटअप था यार. चलो कुछ नहीं, कोई नहीं. सेटअप्स हैपेंस. सही है, लक भी आपको ना चाहिए होता है ट्रेडिंग में ना, आपको लक भी चाहिए होता है कभी कभी. लाइक प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज ऑन योर साइड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ लक एज वेल. समटाइम्स द लक इज ऑन यू, इज विद यू, समटाइम्स द लक इज नॉट विद यू. So you have to like deal with everything. So nonetheless man, just lost around $126.2 today, and 126.2 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 today, and 126.2
and I want to show you that how much did I lose today. I lost around $126.2 today. और कल कल क्या सीन है यार. कल tomorrow is there some news tomorrow? Okay, there is some news, but yeah. So I might not trade tomorrow. I'll just use these 2% remaining, this 2% on a very high probability setup from Monday. Done for the day, done for the week. Like I traded Monday, traded Tuesday, traded Wednesday, and then traded Thursday. Like traded 4 days of the week. सही है. कुछ नहीं देखो यार, इसमें ना इट्स लाइक इस पर डिसाइड होने की कोई बात नहीं. इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग. लाइक यू कांट हेल्प थिंग्स आउट. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग. एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज प्रोबेबिलिटी. देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना क्या हो रहा है. लेकिन यही सीन है ना, यू कांट डू एनीथिंग. प्राइस वेंट डाउन, गिव अ गुड सेटअप. लाइक नेवर. पता है क्या सीन है. लाइक मैं ना बड़ा ना मैं अंदर से ना, लाइक मैं ना बड़ा अंदर से पक गया हूँ कि आई वांट टू फकिंग पास दिस फेज 1 ब्रो. आई वांट टू पास दिस बिकॉज तुम लोग को याद होगा कि इस दिन भी आई डिड नॉट पास फेज 1 जस्ट बिकॉज ऑफ $10. $10 और होते हैं. इट जस्ट रिवर्स फ्रॉम माई टी पी. आई कुड हैव पास फेज 1. I couldn't pass, and now I'm back and I'm not back in drawdown, but I have lost most of my profits. So yeah, so now like I have to really like reset my mental income on Monday. So yeah, और आज भी देखो क्या प्यारी ट्रेड थी. आज भी फेज 1 क्लियर हो जाना था, आज भी नहीं हुआ. लेकिन पता है मसला क्या है? मसला कोई नहीं है. मसला मैं एक ट्रेड में भी फेज 1 क्लियर कर दूँगा. एक ऐसी ट्रेड मुझे अच्छी मिल गई, आई क्लियर फेज 1. So we'll see you guys on the next trade recap. Hopefully, I am visualizing that trade. That would be a 1:3, and I'll pass my phase 1 in that trade. I'm visualizing that, manifesting that. Ya Allah, please. Okay, done for the day, done for the week. Bye bye, man. I'll see you guys in the next trade recap. Bye bye. Take care.